This is 168th module of Financial Management course, and we are continuing our discussion on capital budgeting. This is the sixth part of our discussion on the topic. Before this module, we have been talking about the cash flows and why cash flows are taken for the decisions related to investments in capital assets. हमने ये बात की थी कि कैश फ्लोज को कंसिडर करके हम कैपिटल बजटिंग के डिसीशंस लेते हैं और प्रॉफिट की जगह पर कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कंसिडर किया जाता है. We talked about the first part of our estimated cash flows and that was a cash outflow. हमने ये कहा था कि जब कोई नया एसेट खरीदा जाएगा या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें हमें उस एसेट को ख़रीदने में, उसको इंस्टॉल करने में, उसको अपनी फैक्ट्री तक लाने में जो भी कॉस्ट इनकर होगी वो सारी की सारी कैपिटलाइज की जाती है, ऐड की जाती है, एंड दैट इज़ मेड अ पार्ट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट. And this comprises of all these items and this is the initial cash outflow. Point to remember here is that it is estimated cash outflow. And all these cash flows that we have talked about with reference to the outflow and then we'll talk about with reference to the inflows are all estimated cash flows. तो अगर ये हमारा estimate cash flows का accurate नहीं होगा then our capital budgeting decisions would not be very good or very correct. So it is extremely important that when we are calculating these cash outflows and inflows, we are very realistic and we consider all the possible elements while making the calculations of these cash flows. Now, once we have made the investment, जब हमने asset को खरीद लिया, install कर लिया, setup कर लिया, अब उस एसेट या उस प्रोजेक्ट ने ऑपरेट होना शुरू कर दिया. एंड वंस द ऑपरेशन स्टार्ट एंड द प्रोडक्शन स्टार्ट्स then we get the product. The product is then sold in the market and as a result we get revenue. After deducting the expenses and costs of productions and marketing and all those operations, we come up with the figure of amount of profit, which is the net profit. In this calculation, we also have to consider some of the expenses which may not require cash outflows. यानी आम तौर पर हम ये कहते हैं कि जितने भी expenses हैं वो सब के सब कैश आउटफ्लो रिक्वायर करते हैं. यानी अगर हमने कोई एक्सपेंस किया है तो या हम आज ही कैश पे कर देंगे या हम आने वाले वक्त में कैश पे करेंगे या हमने कैश एडवांस में पे करना है. बट देर आर सम आइटम्स विच एक्चुअली डू नॉट रिक्वायर कैश आउटफ्लो. सो जब हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, यानी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो से मुराद है कि ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट द कैश इनफ्लोज दैट वी विल रिसीव फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, that is what is called incremental cash inflows. So these incremental cash inflows are calculated by considering the revenue, the cost and expenses of operations, and also the non-cash expenses. Let's see how does it actually work. So if you look at this table, you would see that there is additional revenue to start with. यानी अगर हमने नया प्रोजेक्ट लगाया है तो उससे हमें कितना मजीद रेवेन्यू हासिल होगा, what will be the additional sales of that project. Now, other than the expenses that we are talking about, which will be subtracted to get this additional revenue, यानी हमारी operational cost इतनी भी हैं, production cost इतनी भी हैं, उन सब को माइनस करने के बाद जो फिगर हमारे पास आ रही है उसे हम additional revenue का नाम दे रहे हैं, but it is without depreciation. Other than depreciation, all the costs are deducted from the gross or net revenue. Then we deduct depreciation of that plant or that asset. And depreciation is one expense which is a non-cash expense. यानी
इसके अगेंस्ट हमें ना तो कैश उस वक्त पे करना है जब हम इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ना ही हमें फ्यूचर में इसके अगेंस्ट कैश पे करना है। लेकिन to determine the amount of net profit on which we have to pay tax, we have to deduct this amount of depreciation. So first, from this additional revenue, we deduct the additional depreciation, and then we get that amount of profit on which we have to charge income tax. Once we calculate the profit, then we calculate the amount of income tax. This is also to be deducted क्योंकि इनकम टैक्स भी हमारे लिए कैश आउटफ्लो होता है, तो इसलिए हम इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं. देन वी गेट नेट चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. लेकिन ये अमाउंट हमारी जो बची है ये हमारा कैश इनफ्लो नहीं है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करते वक्त हमने नॉन कैश एक्सपेंस को माइनस किया था, जिससे हमारी कैश आउटफ्लो नहीं हुई. सो टू फाइनली कन्वर्ट द नेट चेंज इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, we have to add back the depreciation that we deducted just for the purpose of calculating the net profit figure, and ultimately the amount that we get is the incremental cash inflow. तो हम अपनी इस डिस्कशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं कि अगर हम किसी एसेट की इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एडिशनल रेवेन्यू देखना है और डेप्रिसिएशन को पहले डिडक्ट करना है ताकि प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट कर सकें, और उस प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करने के बाद फिर हमें वही डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देनी है, और फिर हमारे पास इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो की फिगर आएगी. डेप्रिसिएशन को हम डिडक्ट और ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है. हम इसको आगे चल के मज़ीद भी डिस्कस करेंगे.